Hello everyone, I welcome you all to the wonderful session, and in today's session we'll be covering out the current affairs from the Hindu. We'll be focusing on the coming examination जहाँ पे हम end of June से start करेंगे and we'll be covering the current affairs day wise. Okay, then we'll be moving towards month wise as well. But अभी हम start करेंगे day wise and we'll be uploading a 15-minute video every day for you in which जिसके अंदर पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे and by the end of the session उस वीक में जो भी important questions रहेंगे करंट अफेयर्स से related we'll be discussing them. So here is the first news in front of everyone. Day of Seafarer 2023, the date, theme and history about it. So date and theme is important. ठीक है, तो यहाँ पे date सबसे पहले जो important है that is June 25th. मेक श्योर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि एक डेट हमेशा पूछी जाती है इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ओके, अब सी फेरर क्या होता है? सी फेरर इज द वन हु लिव्स नियर द सॉल्ट वाटर. फिशरमैन, मेराइन वाटर, जो कुछ भी है यहाँ पे, जो भी वहां पे रहते हैं, दे आर नोन एज द सी फेरर्स. कोस्ट गार्ड्स हो गए, नेवीज एटसेट्रा. ओके, एंड व्हाट अबाउट द थीम ऑफ इट? द थीम ऑफ इट इज मार्पोल. प्लीज मेक श्योर यू आर नोटिंग इट आउट. MARPOL. Marpol at R50. So it is Marpol in capital at R50. Our contribution goes on. Our contribution goes on. Okay. So this is what we have for the theme. अब मैंने बता दिया किससे रिलेटेड है. दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज. इसके बारे में और ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज जर्नलिस्ट A.K. भट्टाचार्य ने ऑथराइज की है बुक हुज नेम इज इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर. वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली हर एग्जामिनेशन में एक आधी बुक के बारे में भी पूछा जाता है. सो वी हैव टू कवर दैट एज वेल. Moving on to the next page. I hope everyone has noted this down. Moving on to the next page, we have NTPC Receives Most Preferred Workspace of 2023-24 award from the Team Marksmen. So NTPC की full form पता होनी भी again is very important. Obviously क्योंकि examination में full form भी आती है, as every one of you already know. So it is the National Thermal Power Corporation Limited. Make sure you're noting it out. National Thermal Power Corporation Limited. ठीक है. इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. एंड देन कौन सी टीम से मिला है? दैट इज ऑल्सो नोन टू ऑल ऑफ अस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या याद रखना है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म, अवार्ड मोस्ट प्रेफर्ड वर्कस्पेस ऑफ 2023 और टीम कौन सी? मार्क्समैन. मेक श्योर आप ये पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? पेटीएम कोलैबोरेट्स विद अरुणाचल प्रदेश टू फोस्टर बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो यहाँ पे पेटीएम के बारे में न्यूज आ गई. अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. पेटीएम के बारे में अगर आया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु कोलैबोरेटेड विद अरुणाचल प्रदेश टू फोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम. हो सकता है पेटीएम ऑप्शन में ही ना हो, तो ऑप्शन में क्या होगा अगर पेटीएम नहीं होगा? PPSL. नाउ व्हाट इज दिस PPSL? इट इज पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड. ने कोलैबोरेट किया है विद अरुणाचल प्रदेश. Let me write that as well for you. It is APIIT. What it is? It is Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park के साथ collaborate किया है ताकि development लेके आई जाए in all the stages for any of the startup. I hope it is clear to you. Make sure you are noting all the full forms down. ये जो दो हमने अभी करी हैं, they are also very important. क्योंकि question हो सकता है पेटीएम ना पूछ के PPSL हो ऑप्शन में, and then PPSL ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने APIIT लिखा हो, क्योंकि ये पैटर्न देखा जा रहा है बैंक एग्जामिनेशन में आजकल स्पेशली. Moving on to the next news. Let's see what we have next. So RBI imposes penalties on Axis Bank, Jammu and Kashmir Bank and Bank of Maharashtra. So as all of you already know that RBI is the apex bank of India. तो उसके अंदर अब हमें क्या पढ़ना है कि इन्होंने पेनल्टी करी है ₹2.5 करोड़ की टू जम्मू एंड कश्मीर. किस लिए? क्योंकि ये जो है जो कुछ भी इशूड है रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने पेनल्टी लगा दी उसके ऊपर. नाउ यू हैव टू जस्ट लर्न द नेम ऑफ द बैंक्स, क्योंकि हर बैंक के ऊपर अलग अलग पेनल्टीज लगती हैं. सो वी कांट रिमेंबर ऑल ऑफ देम. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से 3 बैंक थे. दैट इज इट. Okay, next news we have is TCS secures $1.9 million deal to digitally transform UK's National Employment Saving Trust. A very important thing to learn.
अब इसके अंदर है क्या, टीसीएस जो हमारी कंपनी है एक, इट इज अ जायंट राइट, इट इज आईटी सर्विस जायंट। इसने क्या किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज अनाउंस्ड द एक्सपेंशन ऑफ द पार्टनरशिप। किसके साथ है वो पार्टनरशिप, विद नेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपके सामने लिखा है ना, नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट, इसकी जो ये फुल फॉर्म है, किसकी फुल फॉर्म है, ये नेस्ट की। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग वी लर्नड इन टुडे सेशन, ठीक है, इसके बारे में क्या है कि द कंट्रीज लार्जेस्ट वर्क प्लेस पेंशन स्कीम है ये, वहां की, कहाँ की, यूके की, उसके साथ इतने बिलियन की डील और इतने बिलियन डॉलर्स की डील और क्या करी है, इंक्रीज हुई है, एक्सपैंड हुई है बेसिकली। सो इट इज अबाउट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मूविंग ऑन, give me a minute. Yeah. So Vienna retains title as most livable city global livability index 2023 report. तो इसके अंदर यही है कि कौन सी कंट्री ने रैंक 1 किया है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, वियना। उसके बाद कौन सा अवार्ड है, मोस्ट लिवेबल सिटी का, और कौन इशू करता है ये रिपोर्ट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ने ये क्या किया है, इशू किया है। उसके बाद व्हाट वी हैव इज डीआरडीओ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ओके। सो डीआरडीओ ने क्या किया है विद एलएनटी, एलएनटी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, टाई अप किया है फॉर एआईपी सिस्टम इन इंडियन नेवी। अब ये तीन फुल फॉर्म्स तो इसके अंदर ही आ गई, एआईपी, डीआरडीओ, एलएनटी। एलएनटी क्या है, एलएनटी है लार्सन एंड टर्बो, ये क्या है, ये एक कंपनी है। डीआरडीओ क्या है, इट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इट इज लार्सन एंड टर्बो, इन दोनों ने टाई अप किया है फॉर एआईपी। एआईपी क्या है, इट इज एयर इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपल्शन। सारी फुल फॉर्म्स को नोट डाउन करना है आपने, सिस्टम इन इंडियन नेवी, बेसिकली दीज मॉड्यूल्स comprising fuel cell based energy modules aim to generate power and produce hydrogen as needed। तो ये साइंस से रिलेटेड हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मूविंग ऑन, what we have next is, yes, now Telangana CM inaugurates the rail coach factory in Hyderabad, Medha rail factory। तो नाम पूछा जा सकता है, it is मेधा रेल फैक्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीएम का नाम भी कभी पूछा जा सकता है, अदरवाइज भी यू शुड नो द सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, सो इट इज के चंद्रशेखर राव, दैट्स इट। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक 200 इंटरनेशनल कप्स, नथिंग एल्स टू लर्न अबाउट इट। इस न्यूज के अंदर आपको एक ये नाम पता होना चाहिए कि हु सेट्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और कितना किस चीज का रिकॉर्ड सेट किया, आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन, what we have next is वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो ये एक और दिन जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, कौन सा है वो, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अब इसके अंदर क्या होता क्या है, पहले हमें हर डे के बारे में पता होगा तो याद रखना वो थोड़ा इजी हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये सेलिब्रेट कब किया गया, सो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जून 21st 2023। अब इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट इसको सेलिब्रेट करता है, कौन से दिन को, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे को। है कहाँ इसका सेंटर, हेडक्वार्टर बेसिकली देहरादून में, ठीक है। हेडक्वार्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसने ये ऑर्गेनाइज किया था। अब ये इनिशिएटिव होता क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द वाइटल रोल प्लेड बाय द हाइड्रोग्राफी इन इंश्योरिंग सिक्योर नेविगेशन, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल मेराइन डेवलपमेंट, मेराइन डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये सारा कुछ, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन विद डिप्लोमेसी। अब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जून 24 को, किसलिए, टू ऑनर एंड रिकॉग्नाइज रिमार्केबल वुमेन इन द फील्ड्स ऑफ डिप्लोमेसी, डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ग्लोब। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू टू, लेट्स मूव ऑन नाउ। अगला है टाइटैनिक सब डिस्ट्रॉयड इन द कैटास्ट्रोफिक, क्या है ये, इम्प्लोशन। अब ये इसके बारे में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दिस न्यूज इज आल्सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये वैसे भी काफी सारा रहा है काफी दिन न्यूज में अबाउट दैट सबमरीन, आई होप एवरीवन ऑफ यू नो। अगर नहीं पता तो यू कैन टेल मी, आई कैन let you know in tomorrow's class. So it is International Olympic Day now, another day. So International Olympic Day is being celebrated on 23rd of June. So we have learned 3 to 4 days in today's session itself. Moving on to the next page, now we'll be moving on to the questions, and we'll be doing 10 to 15 questions as I have already told you by the end of the session. So here is the first question with us.
What is the purpose of the Nandi portal launched by मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज? तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, उसका पर्पस पूछ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या रहेगा, हमें इसके अंदर जो है आंसर बताना रहेगा। कुछ एक ऑप्शंस रहेंगी, बट आई हैव डायरेक्टली गिवन यू विद द ऑप्शंस। ओके, सो इट इज टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस ऑफ द वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन। जो भी ड्रग्स एंड वैक्सीन से रिलेटेड होगा वो उसकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। व्हाट इज नेक्स्ट विद अस? द नेक्स्ट थिंग दैट इज बीन गिवन टू अस हियर इज व्हिच स्पोर्ट इवेंट विल इंडोनेशिया होस्ट एज अनाउंस्ड बाय फीफा? So the answer is under 17 World Cup. ये बस आपको याद रखना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। Moving on to the next thing, it is International MSME Day is observed every year on 27th of June. Another day you have learned in today's session. It is about the MSME Day. कब मनाया जाता है? 27th of June को। Make sure you are noting everything down. तो basically उसका theme पूछा गया है इस question में। So future ready MSMEs for India at 100 is theme of the MSME Day 2023 in India. Now there is a thing that you need to tell me in the comment section, MSME की full form क्या होती है? 2 questions daily I'll be giving you. ठीक है, एक MSME हो गया, दूसरा question by the end of the session I'll be telling you जो आपको comment section में बताना है। So who has been appointed as the MD and head, managing director and the head of the institutional banking in India for DBS Bank? So who it is? It is Rajat Verma. अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। मेक श्योर आप सभी अपॉइंटमेंट्स को, वैसे सब कुछ ही काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। Who has been sworn in as the Prime Minister of Greece for the second term? It is Kyriakos Mitsotakis. So the name is again very important. What was the theme of the 8th Global Pharmaceutical Quality Summit 2023? तो थीम पूछी जा रही है, so the theme has to be the patient centricity, new paradigm of manufacturing and quality. The summit focused on exploring new approaches to manufacturing and quality assurance in order to prioritize patient needs and enhance the overall healthcare system experience as well. Moving on. So what is the retained GDP growth projection for India for the fiscal year 23 to 24 according to S&P Global Ratings? For that you need to know what is S&P. It is Standard and Poor's. It is a global rating company index we have. So it is 6%. Which Indian university secured the highest position in Asia University Rankings 2023? It is Indian Institute of Sciences. Very important ranking bhi aati hi aati. So which country holds the first position in terms of number of universities featured in the Asia University Ranking 2023? It has to be Japan. Next is which country is expected to be the fastest growing economy among the Asia Pacific nations according to S&P Global Ratings? So it has to be India. तो ये क्या है, रेटिंग्स के बारे में क्वेश्चन आता है। सो S&P के बारे में वी हैव ऑलरेडी रेड, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में भी हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। Next is under the special assistance to states for capital investment 23 to 24 scheme, how much capital investment has been approved for 16 states? So that amount you need to learn, that is 56,415 crore, and until you note this down, aapko yaad nahi hoga amount. Next is how long is the interest-free loan provided to states under the special assistance to states for capital investment 23 to 24 scheme? It has to be 50 years. Which state has been allocated with the highest amount under the special assistance to states for capital investment 23 to 24 scheme? It has to be Bihar. What is the reward associated with Gandhi Peace Prize? 1 crore, citation plaque, and a handicraft, basically a traditional handloom product milega. Next, the last question is, what is the projected retail inflation for India in the fiscal year 23 to 24 as per S&P Global Ratings? It has to be 5%. Now, अगर आप ये जो हमने 15 questions किए हैं और 8 to 12 हमने current affairs किए हैं, if you listen them even twice, you're going to learn them. ठीक है, तो make sure you listen them twice, you note them down, अपने आप ही सबको सब कुछ याद हो जाएगा, and 35 marks is the minimum questions current affairs is going to take for your examination. It was great having you. See you in the next class. If you have any doubts or any other question, you can ask me. Also, मैंने आपको एक 2 questions देने थे. 1 question is already been given to you. दूसरा चीज ये है, आपको मुझे full form बतानी है S&P की. I have already told you. You have to note that down. Okay? In the comment section. See you in tomorrow's class. Bye bye everyone.